psychologists every year to the proud pool of Indian mental health professionals. He was also instrumental in starting and setting up the Department of Psychology at MREI, which caters to over 200 students currently. He also developed several behavioral training modules, including those on leadership, public speaking, and attitude change, which are being used by leading defense organizations such as NDA, IMA, and OTA. He also specializes in psychometric testing and has worked with institutes such as TCS and IBPS, which do copious assessment in the areas of recruitment and promotion. He also organized entrepreneurial training camps for young people at the Entrepreneurial Development Institute of India with the aim of developing and refining entrepreneurial skills amongst budding entrepreneurs of India. So with this brief introduction, I now request Dr. K.M. Tripathi to please address our participants on today's topic. Welcome, sir. Good afternoon, ma'am. I hope I'm audible. Yes, sir. Thank you very much. And I would also request the host to give me the screen sharing rights, because I don't have perhaps the screen sharing rights right now. So meanwhile, thanks a lot for your nice words for me, ma'am. I'm feeling humbled, and it's a great opportunity to be part of this particular workshop, and specifically for the institution where I had been a student, and being back there as a speaker is a really great opportunity to be in. And thank you once again for the words that you have spoken about me. Meanwhile, if I could be given the sharing rights so that I can start with my presentation on the topic. Good afternoon, sir. Just try once if it is done. Yeah, let me check, ma'am. Yes. No, it is saying host disabled participants screen sharing. 1 minute, sir. Okay. Which करें? Yeah, now it is APM AMP. So now just try once. I have done. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Now it's working. Okay. If anyone can give me a confirmation that whether you all can see the presentation right now or not. Yes, sir. Yes, it's visible, sir. It's visible. Okay. Yeah. So as directed by Dr. Richa Singh, I had been told that I'll be talking about experimental research design with the students, and I hope the students can also see the slides. Now, before going for this topic of experimental research design, it is important and mandatory to talk about that. Why do we go for the researches? Why do we do that? Okay, just give me a second if it is. Yeah. So basically, whenever we talk about research, or whenever we talk about doing any kind of research, we are basically focused on knowledge. The reason for doing any kind of research is that we want to acquire knowledge. And primarily, whenever we talk about knowledge, we generally seek that the possible sources of knowledge can be from 6 different directions. And it might be life experiences, tradition, expertise,
reasoning, scientific method, and social science inquiry. So whenever we talk about the knowledge and what can be the possible source of knowledge, it will all be either of these six different options. And as a as a as a particular, I should say, the aspirant of knowledge, you learn through your own life experiences. A lot of time, your own experiences, what is basically being treated in terms of empiricism, you must have been told about the same, is basically acquiring knowledge through your senses, what you experience yourself. And then tradition also plays a great role in devising the knowledge and distributing it. So tradition also is somehow it defines that how things will be and how things had been over the period of time. Apart from that, expertise is something, means you must have been hearing about the Guru Shishya Parampara, which have already been uh, there in our history, and it was all about acquiring knowledge through expertise. So at that time in ancient India, people used to go to gurus in order to seek their expertise and in order to imbibe the knowledge that they can have from them. And then reasoning had been also a great source of knowledge acquisition, because sometimes you think about problems, issues, and scenarios yourself, and then through after applying your reasoning, either inductive or deductive, you start earning knowledge. It also becomes the source of knowledge what you generally acquire. Perhaps you already have studied, all of you are probably the social science student, specifically psychology. You must be knowing that reasoning had been a great source of acquiring and earning knowledge. And then comes the scientific method and social science inquiry. The scientific method is the most kind of recent advancement in the field of knowledge building and knowledge acquisition. And social science inquiry, there are different methods. Perhaps in the later part of this workshop, you will be told about all of that how do you go about doing the qualitative studies, and how do you get to know about the different types of social science inquiry, specifically apart from experimental design, the quasi-experimental and all, that will all be taken up. And there you will get to know that these all are the different ways how you get to know about the knowledge. Now, apart from all these, the major thing is that what had been the objective of knowledge acquisition, means why do we want to have knowledge? Okay, because if you are actually talking about knowledge, we must be having some objective behind it. So essentially you can see that whenever we talk about knowledge, we are basically focused on these two things: knowledge building or problem solving. So whenever we think of any kind of knowledge acquisition, whenever we talk about, and I tell you why I'm talking about this knowledge acquisition, because if I'm talking about experimental research design, then I'm actually talking about research. And when I'm talking about research, I'm specifically focusing on that knowledge part, because whatever research you're doing, you are doing it for some kind of knowledge acquisition only. And in any kind of knowledge acquisition process, essentially, you end up in two different ends. Either you can end up building knowledge, or you will end up solving a problem. Okay, and this is how you must have been told about the different types of research. And if you talk about the different types of research, you must have been hearing about basic and applied researches. You already know that knowledge building is a part of basic research, and problem solving is a part of applied research. So that is how it is actually contributing towards the process of knowledge acquisition. You must have been hearing about the uh, about the different disciplines like science and engineering. These are example, means whenever we talk about basic sciences, the basic sciences are basically the basically the focuses on the process of knowledge building, whatever the models, whatever the theories that are being developed by the scientists. It is all basically talking about a different kind of knowledge building process. And then
engineering is basically all about problem solving. So with the help of knowledge building, you develop new theories, develop new models, you work on concepts which have not been explored till now. And then when you talk about the problem solving, you are actually trying to give a solution to already existing problem with the help of your knowledge. Now, that's why the science and engineering are inherently connected with each other. One is developing theories and model, and with the help of these developed theories and models, the problems are being solved, the problems are being addressed. And when the problems are being solved and addressed, in order to become better, we develop or we advance our theory. Okay, so this is how we go about the knowledge acquisition process. Now, the next thing is invention. You all must be knowing that the first invention, whenever we talk about the inventions, the first invention was actually of wheel. Discovery was of fire and invention was of wheel. And whenever we talk about an invention, we are essentially talking about a particularly specific research process. No invention can take place in either of the ways. So we have to talk about experimentation. As you can see in the picture also that the first kind of wheel was made of stone, and it was not even spherical in nature. It was not round, completely round. But as the time proceeds, it started becoming more complicated and it started becoming more efficient. So as time proceeds further, as knowledge building process proceeds, your developed knowledge starts getting complicated, start getting more in its more purest form. So either you're talking about the invention of wheel or you are talking about the God particle. In both the cases, you will see that the inventions are following a proper experimental research paradigm. And before going into all those discussion of experimental research, it is important that we should talk about history of experimentation, because it is very important that Please, all the participants, mute yourself. Sir, please continue. I'm so sorry about that. Please continue. If you talk about the history of experimentation is actually rooted back to 720 BC, from where the first experiment was conducted in order to identify and understand whether the God exists or not. And if you will see the Old Testament, you'll find that there was a person called Prophet of Elijah who was actually contending the already existing God. And then there was an experiment plan in which both the particular sites, there was at one side there was Prophet of Elijah who was following the Judaism, and on the other side there was people who were following Baal, and they both were actually they both were contending that my God is more powerful, and the experiment was conducted that whose God is stronger will take the sacrifice. And they offered the sacrifice, and the Prophet of Elijah's sacrifice was accepted by the God, which was the first case of experimentation. But when we talk about this experimentation was actually full of flaws. There were no control, there was no manipulation, there were no what I should say identification of variable and all. It was just random event, on the basis of what we can say that the first recorded experimentation was done. And after that, in 430 BC, if we talk about the Empedocles experiment on air, he was conducted an experiment on air, and he established that air takes a space, and this space was being created by the air. So he did it with the blank vessels, and this experimentation was initially done in order to prove the establishment of these 5 elements. Then further, future of experimentation introduced
by Muhammad Ibn Zakaria in 10th century. He introduced control. So when you talk about the control in experimental research design, and this control are going to be used by the different kind of variances that takes place. So if you are going to control these variances, the extraneous variance and all, these controls are being introduced by Muhammad ibn Zakaria in 10th century. And after that, till that time, whatever the experimentation was being performed, all the experimentations were being done and then they were being observed and experienced. And people used to make note on the experiments. They were not quantifying, they were not actually noting their observation in terms of quantification. Then Ibn Sina in 1020 AD, Ibn Sina was the first person who introduced the experimental observation in terms of quantified data. So quantitative analysis of an experimentally observed data had begun at the year 1020 when he started working on basically he was a medical practitioner, he was a physician, and when he started studying about the effect of different medicine on human body, in that context he started using quantification in order to understand the experimental observation. And then finally in 1021 Ibn al-Hakim write the book on optics, and this was the first scientific book which talked about the light and how light functions and all. And there were several experiments which was done by the particular researcher Ibn al-Hakim, on the basis of what in future the cameras were developed. So basically these were the old people who were pioneer of experimentation and how the experimentations are going to be performed. Then comes the definition. Now we will come back to the topic, what we were actually talking about. All this history of experimentation was essentially important, because if you don't understand the history and if you don't know from where the things have came, it would be very difficult for you all to understand the meaning of the particular concepts. Now, when we talk about experimental research design, experimental research design is a blueprint for the conduct of a study that maximizes control over a factor that could interfere with the study's desired outcome. Now you see why we are conducting and why we are creating an experimental research design. Basically, we are creating these research design in order to maximize our control over the outcome. Okay, and why we want to have these control, because you see that in both the particular definitions, either you talk about Nancy's definition or Kothari's definition, which is the arrangement of conditions for the collection and analysis of data in a manner that aims to combine the relevance to the research purpose with economy in procedure. So you can see that in both the definition, that is one thing which is common, that it is focusing on control. Now control is something which is very important component of the research design. If you can control it, you can ensure objectivity. If you cannot control the extraneous variable, if you cannot control your basically independent variable in a way that how you are going to manipulate it, then of course you cannot have an objective research done in your blueprint. So that is how this experimental research designs are defined. Now, what are the different purposes of the research design? It determines how the study will be organized, when data will be connected, and when intervention, if are to be implemented. So the first basic purpose of creating a research design is that it determines that how will you organize your research, and how will you go about process of collecting data, and what interventions are there that you will be implementing. I would suggest you all to see there is a concept given by Saunders, S-A-U-N-D-E-R-S, Saunders, and he talks about the research onion. If you understand the concept of research onion, you will be you'll be surely, it will be very helpful for you to understand the whole research process, that how we are going to design our research. And that experimental research design can be very clearly understood by following the concept of research onion. So basically, whenever we talk about a research design, it focuses on collecting data and intervention, what are the intervention and when it has to be implemented.
Then maximizing objectivity in study protocol implementation and data collection. As I told you that any research which is being done in a scientific sphere, in a scientific arena, is all about maximizing objectivity. Objectivity is something which is a primary objective, primary aim of doing any kind of experimental research. Maximizing objectivity in the study is something what science aims for. And if you claim yourself to be a scientist, if you want to claim that psychology is a science, then you need to ensure that the objectivity should be there. If objectivity is not there, you cannot claim to be a pure science. And if you will go to the history of psychology, this was the major reason of the conflict between the Freudian and neo-Freudian, like Jung and Sigmund Freud, that one was talking about objectivity and the other one was talking about being a little scope of subjectivity. So this is how it is. Now, it facilitates the use of generally accepted method of inquiry that safeguard researchers from drawing incorrect inferences and conclusions. Now, on the basis of this, I can very clearly say that it facilitates use of generally accepted method, means it helps the researcher in drawing the right conclusion. If the research design is well made, well created, if the manipulations are being done purely, and if the controls are being created properly, and if the statistical methods are being used in a right manner, it will actually guide the students, guide the researchers to draw right conclusions, appropriate conclusions. Now, the other methods, other purposes of research design, minimizing time and money. This is something which will keep coming back coming back again and again to all the particular people who do the researches, that whenever you do an experimental research or whenever you create a research design, please be very sure that you are minimizing on your time and money, because it is always in an star. If you are doing a research and if you want to be a researcher in future, you want to take research as a serious profession, you have to be minimalistic about the usage of your time and money resources. Helps in advanced planning. If you are designing your research properly, it will give you ample scope of planning everything in advance. It helps in selection of appropriate tools. So if your research design is good, of course, you will know what to do and what tools not to take. It eliminates bias and marginal error. You already know that biases are something which are going to actually demolish all of your research design. So it is very important that you eliminate all those biases and the errors that you are encountering. Just a minute. Now, these are the basic elements of research design, and I hope a lot of things have already been covered. You must have been told about the factors, variables, and all. So the basic elements of research design, if you talk about, there are 6 basic elements in an experimental design. What you should always keep an eye on, means as a researcher, you should have a very keen eye on your basic elements. Now, if we talk about all of this, factors are something which are very, very important. Now, whenever we talk about factor, basically the controlled independent variables are being treated as factor in your research design. So what independent variable you are going to use in your research is something which is going to be very, very important for you. I hope you already have been told about the variables and all in your prior classes. So it doesn't need any further explanation. Then comes treatment, magnitude or unit that has to be administered, means what treatment you are giving. Now, in psychology, whenever you plan an experiment, generally the treatments are segmental. And whenever you try a treatment, whenever you are
apply a treatment, it goes separately and uniquely for the different levels. But if you talk about comprehensively, if you talk about other forces of knowledge acquisition, you will see that the magnitude does matter a lot whenever we talk about these treatments. Then comes experimental units. These experimental units are the particular blocks on which you are working on. Every single experimental unit represents a single chunk of subjects on which you are going to perform your experiment. Then comes sample size. That is also an important thing. You will be talked about and you will be told about sample size. It is something which is very, very important. And in all the experimental research design or in any research design, sample size is something which ensures the accuracy of your results, that whether your results are going to be accurate or not, whether they are going to be generalized or not. And then comes randomization for ensuring objectivity, for ensuring scientificness or the scientific nature of your study. It is important that you do apply randomization. And then blocking. Now, blocking is something which assures the homogeneity of your experimental group. So whenever you talk about creating blocks, either you talk about RBD, randomized block design or something, you are trying to assure homogeneity in that way. And whenever you talk about assuring this homogeneity, you basically focus on this blocking. And these are the basic elements of the research design, experimental research design. Now, how will you go about constructing your experimental research design? Now, see, whenever you talk about representing your experimental research design, you must have been seeing it, and I'll be also covering up it in future slides. You will see that always, whenever we talk about research design, perhaps the cursor is visible to all of you. If anyone of you can confirm me that the movement of cursor, can you? Yes, sir, it's visible. Okay, so whenever we talk about this experimental research design, always remember the time. It's all right. The time is being shown from left to right. If you are sitting from your left to right, the time is being shown. So whatever is being shown here is being offered first and then second and then third. So always it will be starting from the left and then going towards the right continuum. So from left to right in notation, reading across time, elements that are listed on the left occur before elements that are listed on the right. So this is how you have to see whenever you are creating your experimental research design for display. Means you all are the master student in your MPhil, in your master thesis or in your PhD. You'll be required to present your synopsis and all, where you will be required to prove your experimental flow, that what will be the flow chart of your experimentation, how your experimental process will take place. Always remember that your timeline should go like this. Means when you are observing for the first time, it should be mentioned here. When you are observing for the second time, it should be mentioned here. From left to right. I hope it's clear. Then comes program or treatment. The presumed cause represented with symbol X in all your representation. This is the standard way of representing your research design, that whenever you talk about any certain treatment that has to be given in your experimental research design, it is being shown as symbol X. When multiple programs are being studied using the same sample, we can keep the program as X1, X2, and comparison group which does not receive the program under the study number X is used. So basically, whatever the programs that are being offered, whatever the interventions that are being offered, they will be represented with the value of X. And if there are more than one intervention, then of course there will be they will be represented as X1 or X2. Means if suppose I'm talking, if suppose you take this line as an example, and this particular place, if I tell you that this place is your observation 101, and you are observing someone who is actually under post-traumatic stress disorder, and then you introduce a therapy, psychotherapy. It can be anything, it can be REBT or something, and you are the therapist, you apply that on the person, and then you observe him or her again. Then this particular psychotherapy that you have actually administered, that you already have done, will be actually represented as X. Then comes observation. You all know that
observation means how you are going to see them, how many times you are going to do the measurement for your research design. And all the time whenever you are doing these observations that are being decided, that are being defined in terms of O1, O2 and O3, means how many times you are going to take the measurement with the subject that are being defined as O1, O2, O3. Okay, and then group or individual, the final design element consists of the act, group or the individual who participate in various conditions. In design notation, each group is indicated in a separate line. So whenever we talk about the individual, means if I say that this is a single case design, then it is being shown on a singular line. So this is how the different groups or individuals in final experimental research design display will be shown in different lines, okay, through different lines. If there are 3 different lines, it means I'm dealing with 3 different groups, out of which one can be control group and the other 2 can be experimental. I hope it's clear to all of you. Now, the next thing is that the manner in which the groups are assigned to the condition can be indicated by an appropriate symbol that at the beginning of each line. So as I told you that this is the line, if there is an R, if there is an R written in the beginning, you can understand that this is a random assignment, means this is something which has been randomly assigned. And if there is non-random assignment, then you can use the word N in the same place in place of R. And if it has been assigned using a cutoff score on a measurement, means if suppose you have a cutoff score where you say that only those people who are performing better than this, they will be the part of it. These kind of people will be denoted as C. Okay, so these all are the design component of the experimental research design. Right now, I'm talking about the different components of experimental research design. Okay, now these are the features of good research design. Probably it had already been taken care of. I hope it should be flexible, appropriate, efficient, economical. It should give a smallest experimental error and high reliability and validity. So you already know that experimental errors should be minimum and reliability and validity should be on the higher side. Good research design include following 5 points: subjects, variable, time, setting, and investigators. So these 5 things are very important and should be very clearly mentioned in your research design. So if you are talking about any experimental research design, who will be your subjects and what will be their characteristics, it should be very clearly identified. What variables you are going to act with, out of them, who are the variables who are independent in nature, who are dependent in nature, that should be very clearly demarcated, very clearly it should be denoted and should be discussed. Then time, how much time it is going to take, what will be the setting, how you are going to do it, and what will be your role as a researcher in process of this experimentation. All of these should be very clearly mentioned and very clearly explained. So now, what matters to an experimenter? This is something which is very important, that when you are creating an experimental research design, what is that it is important for you. So manipulation is something which is most important for you as an experimenter, because as an experimenter, I must say here that manipulation is something which gives you feeling of being in control. Because if you are manipulating your independent variable and your independent variable are showing a hypothesized result or not, if there is some differentiation or kind of different results are being displayed in response, then all your manipulations are working actively, and this is how you feel that you are in control. Within the specification of a given research design, the researcher actively initiates, implement, and terminates this procedure, which is being called manipulation. In a perfect experiment, you as an experimenter decides that when to start, how to implement, and when to finish the manipulation that you are working on. It is linked to the independent variable. The researcher decides what is to be manipulated to whom, the manipulation applies, when the manipulation is to occur, and how manipulation is to be implemented. So as I told you, all 3 particular things are being decided by the experimenter only.
And this is something which is the most important component of an experiment. Now, control is a great particular characteristics in any kind of research. So I hope quite a few people among you must be coming out of UP board and must have studied in UP board and have given a lot of examination at their 10th and 12th level, because I'm also from the same UP board and I have been subjected to that question. You must have came across the question that economics is a science or art, psychology is a science or art. Perhaps I hope you all have gone through these questions, whether these questions have been asked to you or not. If you all can reply or not, I don't know. Sir, can you please repeat the question? I'm saying that if at your high school, intermediate or graduation level, have you ever seen these kind of questions that psychology is a science or art, please explain or elaborate? Economics is a science or art, please elaborate. Have you heard these kind of questions? Yes, sir. These are very common questions. Have you ever thought that why these questions are being asked? Sir, that time too we didn't know much, but now we can answer it. No? Please go ahead. Yeah, sir, as we use the method, such an experimental method in psychology, which is totally based on cause and effect, and it's totally a scientific method, na, sir? So that's so that we can say that psychology is a science. No, I'm not asking that, whether psychology is a science or art. I'm saying why these kind of questions are being asked. Because psychology has been derived from philosophy, na, sir. So there are many myths about it that many people, as a layman, think psychology as of arts. Now that's why I think these type of questions arise. This is not about that. Let me clarify this first. And you see, in any discipline, be it anthropology, sociology, psychology, economics, political science, any particular discipline, this question is going to be common and had been asked to all the students, that whether your discipline is a science or art. You see, whenever we talk about anything being scientific, it is something which is related to our cognition, where we are talking about control. And whenever we talk about art, it is related to the affect, which is not under our control, okay, which cannot be manipulated. So it is all about that acquiring control over something. So science basically, science gives us an opportunity to control everything, whereas art does not give that control. Okay, so this is the main difference between the science and art discourse, what is being talked about all the time, that whenever we say that a subject is either science or art, a subject is both. When it is actually working on your emotion and affect part, it is an art. When we talk about when we talk about using it cognitively, it is a science. So control is something which decides that whether you are operating into a scientific what I should say paradigm, or into an artistic paradigm. So see, whenever I say that if I talk about a recipe, that how a recipe is being made, so that is something which is scientific. If I say that Maggie is a recipe and everyone knows how to cook Maggie, it's a recipe, it is scientific. You have complete control over that. Aapko puri tarah se pata hai how you are going to do it. So you are in complete control. So you know that because of recipe. But what kind of Maggie you will make, whether it will be liked by others or not, that is something which is art, because it is not under your control. So basically, the difference between the science and art is that a scientific piece is something which always focuses on control, whereas art is something which is out of the control. Okay, so that is something that you need to understand as an experimenter, that whenever you talk about control, you are actually talking about control in terms of making your particular thought process or your particular procedure more scientific. Now, whenever we talk about this control, it must be exerted over extraneous sources that might affect a study. It also adds precision, the ability to detect the true effect of smaller magnitude. Researcher must have control over the process to determine who gets what at what time. So see,
all these things that are being mentioned here are actually indicating that how will you ensure the control. And when we talk about ensuring that control, we are basically focusing on the extraneous variable and how can we control that extraneous source of variance. You remember that whenever we talk about any research, objective of research, we talk about what is the amount of true variance. The true variance is always when we talk about the when we minimize the error variance, when we subtract the error variance from total variance, what we receive, what we get is the true variance, and that can only be achieved by acquiring or by applying better control. Now, how will you get that control? You will get that control when you use randomization. So your random method of assigning subject, which is being called as randomization, is a way to ensure the control. Structuring the assignment process in such a way that major known extraneous forces can be controlled. Blocking. Within each treatment group, there is approximately even representation of these extraneous variable in each of the treatment groups. So blocking also helps you when you take blocking. When you do blocking means when you match the subject and then you put them together, you are basically trying to cancel out the extraneous variance with the help of blocking. Okay. Now how will you go about exerting control further? So you will use matching. If you know that you are working under an experimental research design, you'll have to identify one or more extraneous variable that has to be controlled. And as soon as the subject is recruited for one of the treatment group, the researcher trying to find a subject for other group identical to the first subject on the specific matching variable. Most of the time, these matching variables are the part of demographics, and we talk about matching the subjects on the basis of the demographic details so that the error of variance, the sources of variance can be minimized. Then comes counterbalancing. It is used in studies in which the researcher is concerned that the order of presentation, order of in which the treatments are being administered are going to affect the result. So that's why all the subjects receive all treatments. However, the order of administration of the treatment is varied, but they will all receive all the kind of treatments, means all the kind of independent variables will be exposed to all the kind of subjects. Then comes randomization. You already know about it. And in sampling also, you will get to know more about it. If you have been taught, good enough. If you have not been taught, you'll be soon told about it. It provides a way to ensure that characteristics of subjects are dispensed across sample in a non-systematic fashion. Now entails two separate processes: random selection of subject from the population and random assignment of subject to treatment and control condition. So how the randomization is taking place in any experimental research design, either you take random people from the population at all, or you randomly assign subjects to different control condition or experimental conditions. Okay. Now, how this random assignment takes place entails allocating sampling unit to treatment and control condition in a non-systematic way using a decision method that is known to be random. Now, it is the representativeness of the sample relative to the characteristics of the population. It is intended to exemplify. So, see, whenever we talk about the random assignment, जब भी हम randomization की बात करते हैं, वहाँ पर what is our objective? Our objective is to put people randomly into the group. And why we want to have this random assignment? Because randomization is actually in a way basically it is the process of counterbalancing, means whatever the treatments that are being offered to the different groups can be generalized. And whenever we talk about this generalization, it will only be ensured properly when the randomization is in place. So that's why the random assignment of the subjects are very, very important. Then comes these are the three major principles that every experimental research design requires. Professor Fisher का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे ख्याल में. Professor Fisher has enumerated three important principles of research design, and Fisher के ही नाम से F test भी होता है जो आप लोग एनोवा में करते हैं. तो उन्होंने ही दिया था ये principle of replication,
randomization and local control. In any experimental research design, जब भी हम कोई experimental research design create करते हैं तो हमें इन तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, replication, randomization and local control. Now what are these three things? ये तीन चीजें हैं क्या जिनके ऊपर हम बात करते हैं, जिनका हम ध्यान रखते हैं. So first of all, replication. According to this, replication in the experiment, replication in the experiment is should be repeated more than once. Thus, each treatment is applied in many experimental units instead of one. Accuracy and precision can increase significantly by this. So हम जब भी replication की बात करते हैं, जब भी हम किसी ट्रीटमेंट को, बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बार बार रेप्लिकेट करते हैं, उससे हम उसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितनी बार हम उसको ऑब्जर्व करेंगे उतनी बार हम उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट देख सकेंगे. जितनी बार हम इफेक्ट देख सकेंगे, जितनी ज्यादा बार उसकी इफेक्ट देख सकेंगे, उतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी हमें मिल सकेगी. जितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी हमें मिल सकेगी, उतना ज्यादा हम इंश्योर कर सकेंगे कि डेटा हमारा प्रिसाइज है और एक्यूरेट है और जनरलाइजेबल है. Then comes randomization. This principle indicates that the researcher should design or plan the experiment in such a way that the variation caused by extraneous variable can all be combined under the general heading of chance. So basically randomization का एक objective ये भी है कि जब हम random assignment करते हैं, when we are actually doing the randomization, हम ये ensure करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई error है भी जिसको हम control कर ही नहीं सकते, मान लीजिए कोई ऐसा एक्सटर्नल एरर है जो कि इनहेरेंट है, आएगा ही आएगा, तो हम चाहते हैं कि वो एरर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, वो एरर भी चारों तरफ बराबर से बढ़ जाए. जब वो चारों तरफ बराबर से बढ़ जाएगा तो अपने आप काउंटर बैलेंस कर देगा इफेक्ट को, और यही काउंटर बैलेंसिंग को करने के लिए हम रैंडमाइजेशन का यूज कर लेते हैं. Then comes local control. Now what is that local control? The extraneous variable, the extraneous factors that the known source of variability is made to vary deliberately over as wide range as necessary, and this needs to be done in such a way that the variability causes can be measured and hence eliminated from the experiment. जो कोई extraneous source of variance है आपके स्टडी में, मतलब आपको मालूम है कि वो आएगा और कहीं से भी आ सकता है. मान लीजिए आप एक स्टडी कर रहे हैं जहां आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ने में नॉइज जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब करता है, और आप एक ऐसी जगह है जहां पर नॉइज होना ही होना है, आप उसको हटा ही नहीं सकते. तो उस केस में हम क्या करते हैं, द वेरिएबिलिटी इट कॉजेस कैन बी मेजर्ड एंड हेंस एलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. कि आप उस वेरिएबिलिटी को सीधा मेजर कर लीजिए, जैसे है उसको उसी तरह से एकोमोडेट कर लीजिए, और एकोमोडेट करने के बाद फिर आप उसको यूज करिए कि हाँ हम इसको इसके साथ ही यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिकल कंट्रोल अप्लाई कीजिए जिसके थ्रू आप वहां से इसको हटा सकते हैं. Now these are the classification of the different type of experimental design. I'll be covering the true experimental design and pre-experimental design only. Non-experimental design जो है वो आप लोगों को मेरे ख्याल से आने वाली क्लासेस में बता दिया जाएगा, quasi experimental भी बता दिया जाएगा. So we will be talking about this true experimental design, which will have pre-test, post-test with control, post-test only with control group, so 1-4 group factorial design, and randomized block design. One group post-test, static method comparison, and one group pre-test, post-test. ये तीन pre-experimental design जो बेसिकली पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं होते नेचर में, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन नहीं होते, उनको हम pre-experimental design कहते हैं. Now this is the true experimental design, the first of its kind, pre-test, post-test with control group design. अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर रैंडम असाइनमेंट है और दो ग्रुप है, फिर प्री-टेस्ट किया गया, आप देख रहे हैं प्री-टेस्ट किया गया यहाँ पर, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दिया गया और पोस्ट-टेस्ट किया गया. तो अब यहाँ पर पोस्ट टेस्ट किया गया, तो और इन दोनों रिजल्ट्स को हम स्टडी कर ले रहे हैं. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर आपने एक स्टडी प्लान करनी है जिसमें आप प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट विद कंट्रोल ग्रुप डिजाइन ये लेकर चल रहे हैं, और मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि हम अटेंशन टेस्ट कर लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या आपके किसी भी अटेंशन के टास्क पे अगर हम बात करें कि चाय पीने का असर पड़ता है या नहीं. मान लीजिए हम देखते हैं कि चाय के आपके अटेंशन के स्पैन को बढ़ा देता है या नहीं बढ़ाता. मान लीजिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ R लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब ये रैंडम असाइनमेंट है. अगर यहाँ पर C लिखा होता तो ये कौन सा असाइनमेंट होता, किसी को याद है? कट ऑफ होता है, कट ऑफ है.
सी मतलब कट ऑफ, एन है तो नॉन रैंडम। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एन लिखा हुआ है तो ये नॉन रैंडम है, सी है तो कट ऑफ है, और आर है तो रैंडमाइज। तो हमने ये मान लिया कि जो सब्जेक्ट का असाइनमेंट हुआ है दोनों ग्रुप्स में वो रैंडम है। एंड देन आपका ये ग्रुप जो है ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और ये आपका कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप आपको काफी बार बताया भी क्या होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखें कि प्री टेस्ट पहले हम एक ऑब्जर्वेशन लेंगे दोनों ग्रुप्स की, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, फिर हम अपनी एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट लगाएंगे। मतलब हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो चाय पिलाई उसको हमने चाय दी, कंट्रोल ग्रुप को हमने कुछ भी नहीं दिया, और उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट करेंगे, दोबारा से करके चेक करेंगे। नाउ ये दोनों चीजों को कंपेयर किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या चाय पीने का असर स्पैन ऑफ अटेंशन पे पड़ा या नहीं पड़ा। इस चीज को हम पता लगा सकते हैं इस डिजाइन को यूज करके। देन देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। अंडर कंट्रोल ऑफ द रिसर्चर अप्रोच टू एनालिसिस कंपैरिजन ऑफ प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। ठीक है, तो हम जो आपको बता रहे थे यहाँ पर वी विल बी कंपेयरिंग दीज टू थिंग्स। Okay, so if we say that this post-test observation of this experimental and control group will be tested against each other, then come comparison of control and experimental group scores that I have already covered. Comparison of pre-test and post-test difference between sample, uncontrolled threats to validity. अब इसमें क्या क्या है, अब देखिए टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मोर्टालिटी, रिस्ट्रिक्टेड जनरलाइजेबिलिटी एज कंट्रोल इंक्रीजेस। अब आप जितनी ज्यादा यहाँ पर एक देखिए ये एक आयरनी है और ये एक काइंड ऑफ डिस्कंटेंट है कि जब आप कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं, कंट्रोल जब आप बढ़ाते हैं तो जनरलाइजेबिलिटी अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल किसी भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, अगर आप सोशल साइंसेस में कर रहे हैं तो कम करना पड़ता है। In this design, subjects have been designed randomly to the experimental or control group. मैंने पहले बता दिया है ये बात। The experimental treatment is to be is given only to those who are in experimental, and the pre-test and the post-test are those measurement of the dependent variable that are made before and after the experimental treatment is performed. All true experimental design have subjects randomly assigned. Group have an experimental treatment introduced to some of the subjects and have the effect of the treatment observed. तो ये ध्यान में रखिएगा, ये आगे भी हमेशा आएगा कि जितने भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसमें हम सी या एन नहीं देखेंगे, वी विल ऑलवेज विटनेस आर। ओके, these are the few advantages of the experimental research design of this kind. It is that the investigator is able to account for events occurring between time 1 and time 2 through observation of control group. It also enables the investigator to control for changes in the instrumentation, since changes or drifts in measurement should affect both groups equally. And randomization decreases the selection bias and maturation. So ये तीन इसके मेजर एडवांटेजेस हैं, जिसमें पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि जब आप पहली बार और दूसरी बार ऑब्जर्व करते हैं दोनों ग्रुपों को, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप को, तो आप बहुत सीधा सीधा देख सकते हैं कि अगर एक मिनट, अगर मान लीजिए इन दोनों ऑब्जर्वेशन को आपने मिला के देखा और ये दोनों ऑब्जर्वेशन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं आ रहा है, मतलब इन दोनों पर स्पैन ऑफ अटेंशन दोनों का, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का और कंट्रोल ग्रुप का ठीक आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने ग्रुप सही सेलेक्ट किया और आपने ग्रुप अच्छा सेलेक्ट किया है, आप आगे बढ़ते हैं। अब आपने इस ग्रुप को चाय पिलाई और इस ग्रुप को चाय नहीं पिलाई और दोबारा से अटेंशन चेक किया। अब यहाँ पर अगर डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब एक ही चीज हुई है इन दोनों इवेंट्स के बीच में, वो है ये एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, मतलब आपकी चाय, और उस चाय का इंपॉर्टेंस और ये उस चाय का रेलेवेंस ये है कि उसने आपके स्पैन ऑफ अटेंशन को बढ़ा दिया है। और अगर ये चीज यहाँ पर नहीं हो रही तो इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर भी इफेक्ट नहीं आ रहा था और यहाँ पर भी इफेक्ट नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये जो आपका ट्रीटमेंट था ये काम का नहीं था। और मान लीजिए अगर यहाँ पर इफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था तो आपको पहले ही यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले आपको यहाँ पे मैच करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये दोनों ग्रुप अगर पहले ही डिफरेंट है तो ऑफ कोर्स आगे मत जाइए, क्योंकि आपका रिसर्च डिजाइन ही फ्लॉड हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर टेस्ट इसीलिए डाला गया है ताकि आप चेक कर सकें पहले कि ये दोनों ग्रुप आपस में सेम तो नहीं दिख रहे हैं। Then comes randomization decreases, ये तो बता दी। Now after post test only control group design, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, वही चीज गायब कर दी। अब ये क्या है, आफ्टर पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ट्रीटमेंट अंडर कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, comparison of control and experimental group of score almost same, uncontrolled threat to validity, instrumentation, mortality, restricted generalizability as control increases। तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी।
अभी एक बार आगे ये पढ़ लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम वापस उसी स्लाइड पे जाएंगे. द डिजाइन व्हिच इज समटाइम कॉल्ड after only control group design, it is composed of two randomly assigned groups, but neither of which is pre-tested. The independent variable is introduced into experimental group and withheld from control group. This design can be useful in situation where it is not possible to pre-test the subject or pre-test is not essential. अब आपको ये लगेगा कि भाई हम यहाँ पर जब कर रहे थे और इस वाले डिजाइन में तो हम ज्यादा साइंटिफिक थे क्योंकि हम यहाँ पर प्री टेस्ट करके पहले ही सब्जेक्ट को देख ले रहे थे और फिर अपने एक्सपेरिमेंट प्लान कर रहे थे. लेकिन क्या हो कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन में हो जहां पर आपको आप प्री टेस्टिंग कर ही ना पाए. मान लीजिए हम बात करें कोविड-19, कोविड-19 हो गया किसी को, उसके बाद आप उसको प्री टेस्ट करने का मौका नहीं होगा ना. आप क्या करोगे, आपके पास सीधे पेशेंट्स आ रहे हैं कोविड-19 के, अब आप उनको रैंडमली असाइन करके अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हो, अलग अलग तरीके से रख रहे हो, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट दे रहे हो और देख रहे हो कि जिसको हमने नहीं दी ट्रीटमेंट और जिसको हमने अलग अलग तरीके की ट्रीटमेंट दी उसका क्या असर पड़ेगा उसके हेल्थ के ऊपर. अब इस केस में आपके पास प्री टेस्टिंग का मौका नहीं हो सकता क्योंकि जो पेंडेमिक से अफेक्टेड है वो सीधा आपके पास आ जाएगा. और इवन प्री टेस्टिंग हो भी रही है तो आपको पता नहीं है, वो सिर्फ बताएगा कोविड-19 पॉजिटिव है, कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है. वो ये नहीं बताएगा कि कोविड-19 में कौन से लेवल पे पहुंच गया, कहाँ पे पहुंच गया, या फिर इसकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है कोरोना वायरस. ये बताने वाली बात नहीं है. एंड दैट्स व्हाई इन ऑल दोस सिनेरियोज आफ्टर टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन कैन बी मोर यूज्ड. देन कम्स सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन. अभी जो सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन है बहुत ही पॉपुलर डिजाइन है. अगेन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है. तो यहाँ पर भी रैंडम असाइनमेंट भी होती है लेकिन ये इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है. देख रहे हैं आप, कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 एंड कंट्रोल ग्रुप 2. और अब आप देखिए इसने क्या किया है. इसने बेसिकली जो मैंने आपको पहले के 2 डिजाइन्स बताए, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट एंड आफ्टर ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन, उन दोनों को सिर्फ मिला दिया है. जो अभी तक आपने ए और बी पहला दोनों पढ़ा, ये दोनों पढ़ा जो आपने, इसको और इसको, इन दोनों को आप मिला दीजिए और आपको सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन मिल जाएगा. बेसिकली वो एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च डिजाइन है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है, जिसमें आप एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल वेरिएबल कंट्रोल ग्रुप को देख लेते हैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी, उसके बिना भी, और अलग अलग कंडीशन में भी देख लेते हैं. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सोलोमन 4 ग्रुप. Now, what it is all about? It is the design employs 2 experimental groups and 2 control groups. Initially, जो रिसर्चर होता है वो रैंडमली असाइन करता है सब्जेक्ट्स को किन्हीं 4 ग्रुप्स में. Those in the first experimental treatment and observed again on the occasion 2. Those who are in second experimental group also receive the treatment but are observed only after the treatment, not before. ठीक है. और इसी तरह कंट्रोल ग्रुप 1 are observed on the occasion of 1 and 2 but they are not given any kind of treatment, and the control group 2 is observed only on the second occasion without previous observation or treatment. Okay, तो आप इसको यूज करते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है. इसके एडवांटेजेस आप देख रहे हैं, इसके एडवांटेजेस हैं जो, these advantages include it has great potential for generating information about differential sources of effect on the dependent variable because all 4 groups are studied at the same time. Both the effects of events occurring between time 1 and time 2 and the maturation of subjects are controlled. So one can examine the scores of the 2 control groups for a measure of maturation without the influence of treatment. तो आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सीधे सीधे दिख जाएगा कि अगर आप देखेंगे इन दोनों कंट्रोल ग्रुप को कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मैच्योरेशन का इफेक्ट पड़ रहा है स्टडी पे या नहीं पड़ रहा. अगर इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है आप बोल सकते हैं कि मैच्योरेशन का इफेक्ट आपकी स्टडी में सिग्निफिकेंट है. Okay, and then the investigator can also compare the difference between the different groups. Means experimental group 1 और 2 में अलग-अलग लेवल पे उन्होंने टेस्ट किया है, अलग-अलग तरीके से चेक कर सकते हैं. ठीक है. Then comes the Sir, yeah. I had a doubt in Solomon 4 group design. बताइए. Sir, आप ये जो हम 4 ग्रुप्स डिवाइड करते हैं, इज इट देयर फॉर कि पहले हम प्रीलिमिनरी स्टडी कर रहे हैं देन उसके बाद उसको पक्का कर रहे हैं, वो उस स्टडी के लिए होता है, या फिर अगर हम 2 वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए होता है? नहीं, वेरिएबल आप कितने भी स्टडी करें,
बेसिकली ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 है, ये कंट्रोल ग्रुप 1 है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 है और ये कंट्रोल ग्रुप 2 है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अब ये प्री टेस्ट आपने किया है, यहाँ पर आप देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आप एक जो देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स हैं, इसमें आप जो ये ट्रीटमेंट दे रहे हो, अब ये ट्रीटमेंट कई हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने आप ऐसे सोचिए कि मैं स्पैन ऑफ अटेंशन वाला ही एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा था पहले जी। ठीक है। तो अब मान लीजिए आपने ये देखना है कि पहले आप सिर्फ चाय की बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एक थी, तो मैं कहता हूँ चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक 3 अलग अलग बेवरेजेस, मान लीजिए 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 3 आ जाएगा। ये तीनों आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आ जाएंगे ना, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। मेरी बात समझ रहे हैं? और आप तीनों ग्रुप को प्री टेस्ट करेंगे और तीनों ग्रुप में अलग अलग चाय देंगे, कॉफी देंगे और कोल्ड ड्रिंक देंगे और फिर पोस्ट टेस्ट करेंगे और फिर कंट्रोल ग्रुप देखेंगे, प्री टेस्ट करेंगे और पोस्ट टेस्ट। समझ गए? जी सर। और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 में आप जब जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए प्री टेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ट्रीटमेंट देंगे, सीधा उनको वहां पर ये देंगे, टेस्ट देंगे और उसके बाद पोस्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। आपको सीधा वही तीनों ग्रुप वापस से आएंगे, मतलब चाय, कॉफी तीनों आएंगी। ठीक है? और उसके बाद आप यहाँ पे वापस पोस्ट टेस्ट करेंगे। ठीक है? और कंट्रोल ग्रुप 2 आप देखिए सिर्फ लास्ट में करेंगे। अब यहाँ पर आप प्री टेस्ट भी कर रहे हैं, पोस्ट टेस्ट भी कर रहे हैं, प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर सीधा पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों ग्रुप को मैच करें, दोनों कंट्रोल ग्रुप्स को मैच करें, तो क्योंकि इसने 2 बार टेस्ट दिया है, तो ये ऑफकोर्स आपके टेस्ट पे ज्यादा मेच्योर होगा, अटेंशन में मेच्योर होगा ना ये, क्योंकि इसने एक बार यहाँ टेस्ट दिया, फिर यहाँ टेस्ट दिया और ये सिर्फ एक बार यहाँ दे रहा है। तो इस स्टडी को इससे कंपेयर करोगे तो आपको मैच्योरिटी का इफेक्ट पता चल जाएगा, इफेक्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑन परफॉर्मेंस आपको पता चल जाएगा इन दोनों को कंपेयर करने में। बात समझ में आ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच। तो वो लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला आपने, पोस्ट टेस्ट दोनों का जो कंट्रोल ग्रुप का कंपेयर करना था? देखो मैंने क्या कहा, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पर ये प्री टेस्ट है और ये पोस्ट। हाँ वही हम भी सोच रहे हैं। पहले इन लोगों को थोड़ा म्यूट करें। प्लीज पार्टिसिपेंट्स। अरे दरवाजा नहीं खोला हाँ मैं ये कह रहा था कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो ये कंट्रोल ग्रुप 1 जो है, वहां पर एक बार आपका ये अटेंशन का टेस्ट हो रहा है और फिर आप ये अटेंशन का टेस्ट दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? 2 बार दे रहे हैं आप, और यहाँ पर आप कंट्रोल ग्रुप 2 में 1 बार दे रहे हैं, यहाँ लास्ट में दे रहे हैं। ठीक है? अगर आप इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो आपको, बिकॉज आपने यहाँ 2 बार टेस्ट दिया है, तो आपकी मेच्योरिटी ज्यादा है उस अटेंशन के टास्क पे, तो आपको आपकी मेच्योरिटी का इफेक्ट परफॉर्मेंस पे दिखाई दे जाएगा। अगर मान लीजिए बेटर परफॉर्म कर रहा है और ये पुअर परफॉर्म कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि मेच्योरिटी का पॉजिटिव इफेक्ट परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मेच्योरिटी इफेक्ट नहीं कर रही है आपके डिजाइन। अब बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? क्लियर हुआ? ये बच्चे ने पूछा था पार्शियली। जैसे मैं आपको रुकिए दोबारा से बता कि मान लीजिए मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ, मान लीजिए ये बस ऐसे ही है कि कोई दवा है जिसको खाने से आदमी की मेमोरी तेज हो जाती है, मान लीजिए ऐसा है। ठीक है? एक कोई दवा डिवाइस की है मैंने, और ए और बी वो 2 डिफरेंट दवाएं हैं जो मैंने डिवाइस किया, एक ही दवा डिवाइस की जिसको खाने से मुझे लगता है कि आपकी मेमोरी तेज हो जाएगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले ये जो पहला ग्रुप है उसको हमने मेमोरी टेस्ट किया उसका। ठीक है? उसको हमने लिस्ट ऑफ वर्ड्स दिखा के मेमोरी जो भी है उसका ले लिया, उसका रीडिंग ले ली, फिर उसको हमने वो दवा खिलाई। ठीक है? और वो दवा खिलाने के बाद हमने वापस से उसका टेस्ट किया। देख के पता चल जाएगा इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रहा है तो इसका मतलब दवा असर कर रही है। ठीक है? उसी तरह से आप यहाँ देखें कंट्रोल ग्रुप में जिसको हम कोई दवा नहीं दे रहे हैं और यहाँ पर मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर भी मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, और उसी तरह से ये वाला जो कंट्रोल ग्रुप है यहाँ पर हम सिर्फ 1 बार मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं, जिसका हम 2 बार मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं और जिसका हम 1 बार मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं। अगर इन दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस आ रहा है तो मतलब मेच्योरिटी जो है आपके एक्सपेरिमेंट में, जो मेच्योरेशन है सब्जेक्ट की मेच्योरेशन, वो इफेक्ट कर रही है उसके परफॉर्मेंस को, ये पता चल रहा है क्योंकि ये 2 बार दे रहा है वही मेमोरी टेस्ट। तो अगर वो बेटर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब वो मेच्योरेशन अफेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा मेच्योर हो रहा है उस आपके मेमोरी के टास्क पे, रिकॉल के टास्क। बात समझ में आ रही है? यस सर।
फिर उसके बाद आता है randomized block design. Now what is randomized block design? It uses two group pre-test post-test pattern or the two groups post-test pattern with one addition a blocking variable. Now the blocking variable, if uncontrolled, is expected to confound the finding of the study, and to prevent the confusion, subjects are rank ordered in relation to the blocking variable. Random assignment of sample both the groups based on the rank order of the variable is done, so that both the groups are equal in relation to the confounding variable. देखिए कैसे होता है, और मान लीजिए आपने जिस पॉपुलेशन को स्टडी करना है आपने उसको रैंडमली ले लिया, ठीक है, आपने रैंडम सिलेक्शन कर ली। रैंडम सिलेक्शन करने के बाद जो आपका कंफाउंडिंग वेरिएबल है, जिसको आप नहीं वो कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको आप ब्लॉक में रैंक करेंगे अपने सब्जेक्ट को, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 ऐसे करके रैंक कर देंगे। और रैंक करने के बाद हम जो हमारा सैंपल है उसको ये ई और सी के फॉर्म में जो ट्रीटमेंट आप यहाँ पे दे रहे हैं, उसके अलावा ये जो आपके वेरिएबल है आप उसको ब्लॉक के साथ में इंट्रोड्यूस कर देंगे। बेसिकली आप एक ब्लॉक क्रिएट करेंगे जो होमोजेनिटी इंश्योर करेगा। मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट सैंपल के लिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में और 4 को लिया आपने क्या बोलते हैं कंट्रोल ग्रुप में, तो आप उन चारों को मैच करके एक साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले को एक जगह रख देंगे कि अगर कोई डेमोग्राफिक बैकग्राउंड वेरिएबल या बैकग्राउंड वेरिएबल है जो कंफाउंडिंग रिजल्ट्स क्रिएट कर सकता है, तो वो साथ में रैंडमली असाइन हो जाए दोनों ग्रुप्स। अगर वो रैंडमली दोनों ग्रुप्स को असाइन है तो वो आपस में कैंसल आउट कर देगा इफेक्ट, और उसका इफेक्ट जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में सिग्निफिकेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको ब्लॉक डिजाइन को यूज करते हैं, जिसमें हम मैच करके डिफरेंट यूनिट्स को डिफरेंट पर्टिकुलर जगह पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में रख देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 को हमने एक्सपेरिमेंटल असाइन ग्रुप में डाल दिया और 5, 6, 7, 8 को कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया। ये हमने जो डाला यहाँ पर जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा था वो भी रैंडमली असाइन हो गया है। फिर उसके बाद फैक्टोरियल डिजाइन आता है। Now, factorial design is something where 2 or more different characteristics and treatments or events are independently varied within a single study. 2 treatment or factors are involved, and within each factor 2 levels are manipulated. It examines multi-causality. This refers to as 2 into 2 factorial design. Extension of factorial design are designed to more than 2 levels of variable are referred as m into n factorial design. जो आप लोगों ने ANOVA लगाना सीखा होगा अभी तक, वो ANOVA आप इसी बेसिस पे सीखते हैं और यही फैक्टोरियल डिजाइन से सीखते हैं, जहाँ पर आप इंटरेक्शन इफेक्ट लगाते हैं वो आप यहाँ से ही करते हैं। एक एग्जांपल है उसका, ये आप देख लीजिए। द फिगर शोज दैट द 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स व्हिच आर रिलैक्सेशन एंड डिस्ट्रैक्शन एज मींस ऑफ रिलीविंग पेन। अब यहाँ पर देखिए, जो मान लीजिए कि किसी को हम कैसे पेन से रिलीव करा सकते हैं इसके बारे में काम करना है, तो अब देखिए 2 कंडीशन है, रिलैक्सेशन, नो रिलैक्सेशन, डिस्ट्रैक्शन एंड नो डिस्ट्रैक्शन। ये 4 कंडीशंस हैं जो दी गई। इन 4 कंडीशंस की वजह से 2+2 का फैक्टोरियल डिजाइन बन रहा है। 2 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन बन रहा है जो 4 सेल बनाता है। मतलब ऐसे लोग जिनको रिलैक्सेशन दिया गया है और डिस्ट्रैक्शन भी दिया गया है, ये ए वाले ग्रुप के लोग हैं। ए ग्रुप के लोग वो हैं जिनको रिलैक्सेशन भी मिली है और डिस्ट्रैक्शन भी मिला है। अब बी वो लोग हैं जिनको रिलैक्सेशन तो मिली है और डिस्ट्रैक्शन नहीं मिला है, ठीक है। सी वो ग्रुप है जिनको रिलैक्सेशन नहीं मिला है बट डिस्ट्रैक्शन मिला है। डी वो लोग हैं जिनको रिलैक्सेशन भी नहीं मिला है और क्या बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन भी नहीं मिला है। तो आपको ये इस तरह से 4 डिफरेंट सेल्स मिल गई। अब इस सेल का मतलब है, पहली बात तो ये कि आप इन कोशिश कीजिए each cell must contain approximately equivalent number of subject so that you can use the repeated measure tool. Cell B and C allows to examine each intervention separately. तो आप देखेंगे यहाँ पे B और C जो है, B और C, यहाँ पर B देखिए, B में आप रिलैक्सेशन नो डिस्ट्रैक्शन सिर्फ रिलैक्सेशन को देख रहे हैं, और C में आप नो रिलैक्सेशन, C में आप जो है डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ देख रहे हैं, और B में आप सिर्फ रिलैक्सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। इनके जो दोनों वेरिएबल हैं, जो बेसिकली आपका एक तरह से कह सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट है, जो एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है, सिर्फ उसकी इफेक्ट देख रहे हैं कि रिलैक्सेशन का पेन पे कितना असर है और डिस्ट्रैक्शन देने का कितना असर है, ठीक है। नहीं देने का क्या असर है वो नहीं देख रहे हैं, इन दोनों के होने का क्या मतलब है, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन को देख रहे हैं।
सेल डी सब्जेक्ट रिसीव नो ट्रीटमेंट एंड सर्व एज कंट्रोल। ये जो सेल डी है इसके लिए आपने ना डिस्ट्रैक्शन दिया ना रिलैक्सेशन दिया, तो मतलब आपने कुछ नहीं दिया, तो ये अपने आप जो है सी हो गया। बाकी तीनों आपके E1 E2 E3 हो गए। ये आपका E1 E2 E3 हो गया, अदरवाइज ये सी हो गया। ठीक है। उसके बाद सेल ए शोज टू एग्जामिन द इंटरेक्शन बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो ए है आपका, ये क्या दे रहा है? ये आपको इंटरेक्शन दे रहा है डिस्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये दोनों मिलके पेन के ऊपर क्या असर डालते हैं। आपको याद होगा शायद जब आप 1 वे अनोवा लगाते हैं, जब आप 2 वे अनोवा लगाते हैं, ये 2 वे अनोवा का भी एग्जांपल हो सकता है जहां पर आप 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन लगाते हैं। तो जब दोनों चीजें मिल जाती हैं, दोनों वेरिएबल मिल जाते हैं, तो कई बार आपका सिग्निफिकेंस जनरल से बहुत जल्दी आपका सिग्निफिकेंस जो है अचीव हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाता है वहां पर। तो यहाँ पर बेसिकली ए वेरिएबल जो है, ए सेल जो है, वो आपके डिस्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को मैच कर रही है। ठीक है। फिर उसके बाद ये प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन आते हैं। ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट था। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस दैट वी वर डिस्कसिंग। नाउ प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डेफिनेशन बड़ी आसान सी है इसकी। इट इज सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डिजाइन व्हिच डज नॉट इंक्लूड एनी एडिक्वेट कंट्रोल। वन शॉट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन एंड इंटैक्ट ग्रुप कंपैरिजंस। ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पहले देख लीजिए। नॉट एन ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन कई बार ये यूज होते हैं और बहुत पहले से ये यूज होते आ रहे हैं। ठीक है। जब डिजाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन में आप जाओगे तो देखोगे कई बार इन नॉन ऑथेंटिक डिजाइंस ने बहुत सारे वंडर्स भी किए। These design does not control for many extraneous factor. इन डिजाइंस के साथ जो प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, you cannot control extraneous variables with the help of this. तीसरी चीज, टिपिकली कंडक्टेड फॉर एक्सप्लोरेटरी पर्पस। अगर आप एक्सप्लोरेटरी पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी है, तो आप प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस को ज्यादा यूज कर सकते हैं। अगर आप कंफर्मेटरी रिसर्चेस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, या सजेस्टिव क्या बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं, तो आप बहुत दायरे में रहते हुए रिसर्च करते हैं। मतलब आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बहुत हद तक क्लियरली डिफाइंड होता है, यूजुअली कन्वीनियंट एंड फाइनेंशियली फीजिबल। तो क्योंकि ये प्री एक्सपेरिमेंटल है और इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारी मैनिपुलेशंस की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत आसान भी होते हैं कंडक्शन में, तो इसलिए इसमें टाइम और पैसा दोनों कम लगता है। Now, these are also called non-designs. ये इसका है वन शॉट केस स्टडी, जहां पर आप सीधा इंटरवेंशन दे रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको बताया था X इज द इंटरवेंशन एंड O इज द ऑब्जर्वेशन। कितनी बार आप मेजरमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई केस आता है, मान लीजिए आपको कल को साइकोथेरेपिस्ट बनते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, आपके पास केस आता है, तो आप उसको अपनी साइकोथेरेपी जो भी दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन द आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर, जो फिर उसके बाद आप उसकी मेजरमेंट करेंगे, जो भी आप उसकी असेसमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको देखेंगे, दैट विल बी वन केस स्टडी, वन शॉट केस स्टडी। इट विल बी प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, ये जनरली आप लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल के प्रैक्टिकल्स में बहुत बार करते रहते हैं, जहां पहले एक बार टेस्ट करते हैं, फिर आप अपनी इंटरवेंशन देते हैं और फिर उसके बाद दोबारा टेस्ट करते हैं। मतलब जो नॉर्मल होता है कि पहले आपने ऑब्जर्व कर लिया कि आदमी, मान लीजिए आपने इफेक्ट ऑफ चंकिंग ऑन मेमोरी पे देखना है कि चंकिंग से मेमोरी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो पहले आपने कॉमन वर्ड्स दिखा करके नॉन सिलेबल जो दिखा के उसके बाद आपने ले लिया ये ऑब्जर्वेशन, देन आपने चंकिंग का कॉन्सेप्ट उसको समझा दिया और फिर आपने दोबारा लिया, तो क्या ये वाली ऑब्जर्वेशन इससे बेहतर हुई या नहीं हुई। अगर बेहतर हुई तो आप बोल सकते हैं कि चंकिंग का जो प्रिंसिपल आपने समझाया वो उसको मदद कर रहा है, नहीं तो नहीं। उसके बाद इंटैक्ट ग्रुप कंपैरिजन, यहाँ पर आप दो ग्रुप ले रहे हैं, इसमें वही इन दोनों को आप इन दोनों को मिला रहे हैं, जिसमें आप एक को इंटरवेंशन के बाद स्टडी कर रहे हैं और एक को आप बिना इंटरवेंशन के स्टडी कर रहे हैं। ये आपके तीनों नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं जिनको आप यूज करते हैं। और ये देख लीजिए आप, टाइप ऑफ वन शॉट केस स्टडी, सिंगल ग्रुप इज एक्सपोज्ड टू एन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्व after the treatment, that is XO, हमने आपको ये पहले बता दिया है। Observe a group of diabetic clients receive diabetic education course, no comparison made, no control, internal threat such as history, maturation and selection of bias, selection bias। तो इनमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है हिस्ट्री पे, मैच्योरेशन पे, मतलब क्योंकि ये आप देख ही नहीं रहे, बेसिकली आप पास्ट में जा ही नहीं रहे, आप सीधा थेरेपी दे रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो चीजें बिलोंग करती हैं सब्जेक्ट की हिस्ट्री से,
बैकग्राउंड से वो आपको पता ही नहीं चलेंगे, उस पर आप काम ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, जहां ऑब्जर्वेशन दिया, इंटरवेंशन दिया, फिर ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है। लिसनिंग टू टेप रिकॉर्डर, इंप्रूव योर रीडिंग स्किल और नॉट, स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग प्री टेस्ट आपने दिया, पहले रीडिंग का टेस्ट देंगे आप, फिर आप उसको टेप रिकॉर्डर सुनाएंगे, गाने सुनाएंगे, फिर आप वापस से देखेंगे। आप एटलीस्ट ये चीज इसमें बता सकते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, गाने सुनने का या टेप रिकॉर्डर में जो भी सुनने का मदद हुआ कि नहीं हुआ, वेदर इट इज एक्चुअली फैसिलिटेटिंग द पर्सन्स रीडिंग एक्टिविटी और नॉट, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है? पहला तो ये बड़ा कन्वीनियंट है, दूसरा बहुत सुटेबल डिजाइन है, बहुत सिंपल है, तीसरा बहुत वीक है क्योंकि ये कंट्रोल की बात नहीं करता, ये सिर्फ बात कर रहा है ऑब्जर्वेशन और इंटरवेंशन की। कैसे ये जा रहा है उसको कंट्रोल करने, कैसे हम एक्यूरेसी, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के एक्यूरेसी को कैसे इंश्योर करेंगे, इस बारे में ये कतई बात नहीं कर रहा, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाई थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी एंड सिलेक्शन बायस भी इसी वजह से है क्योंकि ये वीक डिजाइन है। ये है लैटिन स्क्वायर डिजाइन। यहाँ पर आप देखिए ए बी सी डी, ये जो आप देख रहे हो इसमें मैंने आपको याद हो बताया था, ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है और ये डिफरेंट ग्रुप्स है। कैसे इन ग्रुप्स को ट्रीटमेंट दी जा रही है अगर आप देखें, पहले ए ट्रीटमेंट दी गई, फिर बी ट्रीटमेंट दी गई, फिर सी, फिर डी। दूसरे ग्रुप वाले को पहले बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। तीसरे वालों को पहले सी डी ए बी, चौथे वालों को डी ए बी सी। अब ये पर्टिकुलर डिजाइन अगर आप देखो तो आपको बहुत साफ साफ ऐसे ही दिखेगा, और इसी पर्टिकुलर जो हम लोग हिंदी में जिसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसी को यहाँ पर लैटिन स्क्वायर बोलते हैं। तो ये लैटिन स्क्वायर डिजाइन नाम इसीलिए पड़ा है इसका क्योंकि डिफरेंट टाइमलाइंस पे डिफरेंट जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर दे रहे होते हैं। इसको करने का कारण ये है क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा है क्लाइंट्स को या एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को, उसके ट्रीटमेंट के ऑर्डर का इफेक्ट जो होना चाहिए वो कोई भी नहीं होना चाहिए, वो रैंडम होना चाहिए। इसीलिए आप देखो पहली बार में ऑर्डर ABCD है, फिर BCDA है, फिर CDAB है और फिर DABC है। तो इस वजह से हम इस ऑर्डर को मैनिपुलेट करने के लिए हर बार चेंज करते जाते हैं और टाइमलाइन चेंज हो रही है क्योंकि हर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप अलग अलग वर्क कर रहा है, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सीक्वेंस ऑफ ट्रीटमेंट्स के साथ, ठीक है। ये मल्टीपल ट्रीटमेंट्स जहां पर एंगेज होते हैं वहीं पर ये ABCD लैटिन स्क्वायर डिजाइन काम करना होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत मिनिमलिस्टिक यूजेज होते हैं इसके साइकोलॉजी में। अदरवाइज आपको ज्यादातर यूज करने को पड़ेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कुछ हद तक प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और अदरवाइज तो फिर ज्यादातर लोग कोरिलेशनल और इस तरह की स्टडी ही करते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का है जो आपने अभी देखा है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, so much. Anisha, Anisha So any is of there. you, हाँ Anisha, okay, बोलिए। ask your question. हाँ Anisha बोलिए। अंशिका, अंशिका है, अंशिका। Yes, sir. I have a question कि हमारे subjects जो हैं are human subjects. सर आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि रीडिंग while listening to music अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी यूज टू हैं इस फिनोमेना से, जो ऑलरेडी रीडिंग कर रहे हैं while listening to music, तो उनकी कैपेसिटी नॉन लिसनर्स से ज्यादा होगी। नहीं नहीं तो क्या ऐसा हम नहीं, सब... नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सुनिए, उसमें अंशिका ये है कि अगर आप स्टडी ये कर रहे हो कि लिसनिंग म्यूजिक जो है क्या वो आपकी रीडिंग को इम्प्रूव कर रहा है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लिसनिंग म्यूजिक होगा ना। सब्जेक्ट तो आपके ह्यूमन सब्जेक्ट ही है, लिसनिंग म्यूजिक जो है अब वो किस तरह का म्यूजिक आप सुना रहे हो, क्योंकि हो सकता है आप बोल रहे हो सेमी क्लासिकल, क्लासिकल या फिर जो मॉडर्न बॉलीवुड है, ये तीन म्यूजिक अलग अलग तरीके के हैं मान लीजिए, तो ये तीनों आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको कि कौन सी म्यूजिक से कौन सी म्यूजिक से आपकी रीडिंग जो है फैसिलिटेट हो रही है, क्लासिकल से, सेमी क्लासिकल से या पॉपुलर जो बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं उससे। तो आप अगर ये देख रहे हैं तो ये तीनों जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूजिक है, ये तीनों टाइप ऑफ म्यूजिक आपका आईवी का रोल प्ले करेगा, ठीक है ना।
सर लेकिन जो हमारा ह्यूमन सब्जेक्ट है, अगर वो ऑलरेडी यूज टू है, उसने ऑलरेडी अपना एक मतलब बना लिया है कि हाँ ही इज यूज टू, तो जो नहीं सुन के पढ़ रहा है उसकी कैपेसिटी और जो ऑलरेडी ये मेथड यूज कर रहा है उसकी कैपेसिटी में डिफरेंस आएगा ये तो कंफाउंडिंग वेरिएबल हमारे है ना रिजल्ट उसके। के टाइम हाँ पे। बिल्कुल, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा, लेकिन यही तो कंफाउंडिंग है ना कि मान लीजिए अगर कोई पहले से यूज टू है, तो इसके लिए पहले हमें यूज टू है तो प्री टेस्टिंग इसीलिए करनी पड़ेगी ना। जब आप प्री टेस्टिंग करोगे तो वहां पर ऑलरेडी आप ये चेक कर लोगे ना कि वो लिसनिंग म्यूजिक की हैबिट है कि नहीं, पहले आप उससे पूछोगे भी तो इस बारे में ना। आप अगर, क्योंकि अगर आप रैंडम असाइनमेंट कर रहे हो तो उसके पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि म्यूजिक सुनता भी है कि नहीं सुनता। अगर कोई रेगुलर म्यूजिक सुनने वाला ही है, लगातार सुनता ही है, तो उसके ऊपर एनीवेज कोई भी तरह का म्यूजिक, मान लीजिए अगर वो खुद ही क्लासिकल सुनता भी है, हमेशा से सुनता है, तो उसके ऊपर रीडिंग का कोई महत्व पड़ने वाला नहीं है, कोई असर पड़ने वाला नहीं है उसकी रीडिंग। तो आपको ये बैकग्राउंड तो चेक करना पड़ेगा ना जब आप डेमोग्राफिक्स लोगे उसके साथ। तो सर फिर कंप्लीट रैंडमाइजेशन नहीं होगा, फिर हमें सब्जेक्ट के सिलेक्शन पे मतलब पहले से पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे उस बेसिस पे, राइट? नहीं, आप सुनो, ब्लॉकिंग जब करते हो, मुझे 5 मिनट, ब्लॉकिंग जब आप करते हो, जब आप ब्लॉकिंग करते हो तो ब्लॉकिंग क्या होती है? जब आप ब्लॉकिंग करते हो तो आप काउंटर बैलेंस करते हो। जब आप रैंडम सब्जेक्ट असाइनमेंट करते हो तो जो मान लो 5 5 5 हर जगह किया आपने, तो अगर ये म्यूजिक सुनने वाला जो व्यक्ति होगा, मान लो उन 5 में से एक है और रैंडमली वो असाइन हर ग्रुप में हो गया, तो हर ग्रुप में अगर म्यूजिक सुन के पढ़ने वाला एक एक आदमी पहुंच गया, तो वो अपने आप रिजल्ट को कैंसल आउट कर देगा ना। वही तो काउंटर बैलेंसिंग होती है जो ब्लॉकिंग के थ्रू आप इंट्रोड्यूस करते हो। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? Yes, but by chance if equal distribution of music listeners नहीं हुआ, then also, लेकिन अगर हम उसको equal distribute कर रहे हैं तो फिर वो random assignment नहीं होगा। नहीं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप करोगे नहीं। आपने, मैंने क्या बोला कि आप ब्लॉक निकाल दोगे, बट आपको होमोजेनिटी तो कहीं ना कहीं थोड़ी इंश्योर करनी है ना। क्योंकि देखिए, रैंडमाइजेशन क्या है? रैंडमाइजेशन बेसिकली ये है कि हम केओस को अवॉइड करना चाहते हैं। हम अगर रैंडम असाइनमेंट करते हैं तो केओस को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम केओस को कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे तो फिर वो अपने आप सिस्टमैटिक हो जाएगा, वो रैंडम असाइनमेंट रह भी नहीं पाएगा। तो आप अगर ब्लॉक में जाके बनाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमाइजेशन को कहीं चैलेंज किया है। रैंडमाइजेशन को आप कहाँ चैलेंज कर रहे हो? आप तो सीधा, मान लो आपने ये देखा कि आपके पास 100 लोग हैं, ठीक है, 100 में से 30 लोग आपके रैंडम वो हैं जो म्यूजिक लिसनर है, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? और आपने 4 Yes. ग्रुप बना दिए, 4 ग्रुप बना दिए, और 30 लोग या 40 लोग आपके हैं जो म्यूजिक सुनते हैं 100 में से। आपने 4 ग्रुप बना दिए, 3 एक्सपेरिमेंटल और 1 कंट्रोल, ठीक है। तो आपने रैंडम असाइनमेंट किया, लेकिन ये जो म्यूजिक लिसनर का 40 का ग्रुप है, अगर आपने 10-10 के ब्लॉक में डाल दिया तो रैंडम असाइनमेंट तो ही हुआ ना। आपने चुन चुन के तो नहीं डाला उसमें। आपने 40 में से कोई भी 1 2 3 4 किया, 1 2 3 4 करने के बाद 1 5 9 13 ऐसे जोड़ लीजिए, 1 के बाद 5 5 के बाद 9 9 के बाद 13 13 के बाद 17, ऐसे करके आपने जो आया रैंडम इंडिविजुअल उसको उठा के एक ग्रुप में डाल दिया, उसके बाद अगले 5 को एक ग्रुप में डाल दिया, अगले 5 को एक ग्रुप में डाल दिया, ऐसे करके डाला ना। सॉरी, 10 को, अगर 40 आपके म्यूजिक लिसनर्स हैं आउट ऑफ 100, तो वो जो 10-10 लोग गए चारों ग्रुप में 25 में से, वो अपने आप काउंटर बैलेंसिंग कर देंगे ना, अफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे। अब बात समझ रहे हो? Yes, sir. और कोई क्वेश्चन है अगर किसी का? Any other students, participants, किसी का कोई question है? No. Okay. Thank you so much, sir, for that presentation, and it was truly very, very enlightening. एक बहुत ही serious and I think technical topic होता है experimental research design, and you addressed it in such an easy and simple manner with so many examples. So I really thank you. Now I would like to invite Saloni Chabra, student of MA final year, Vasanta College for Women, to propose a formal vote of thanks to sir. Hello, Yes, Saloni. am I audible? Yes.
Very good afternoon to all of you. It's a privilege and gives me immense pleasure to propose a vote of thanks on our 5th day of National Workshop Research Methods, Behavioral Sciences. First and foremost, let me start by giving glory to Almighty God for making this session a resounding success. There was no internet issues, no glitches. And then I would like to thank Dr. K.M. Tripathi, sir. Thank you so much. Besides your busiest schedule, you took time to deliver this wonderful session on experimental research design, which was very comprehensive and indeed informative session. And also thank you for patiently listening and answering to all the queries. And I would like to also thank the organizing team, Dr. Richa Singh and Dr. Meenakshi. Thank you to both the teachers and Akanshi ma'am for organizing such wonderful workshop where every topic is being covered so comprehensively and by the best resource persons in the field. I would also like to congratulate to all the participants for your patient listening. Thank you. Thank you all of you. Okay, thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, Richa, ma'am. Thank you, Akanshi, ma'am. She was there. Yes, thank you so much, sir. Thank you. Okay, participants, so we'll end today's meeting and we'll meet tomorrow for our next session of this workshop. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Why not leaving?